Good morning, everybody. Welcome back to the class. Today we will be discussing our next topic, the same part of our same topic, next part, sorry. It's future tense. Okay. So we have covered past tense and present tense, and today we will be covering future tense. I hope you people have revised past tense and present tense because it will help you in understanding future tense. Okay, so let's start with the future tense part, and today we will be winding up our tense chapter and we will be starting another chapter tomorrow. So let's see what is tense. So what is future tense? I have told you the definition of tense in the very first class itself. Okay, I have told you that tense have three parts: past, present, and future. I've also told you that past tense, present tense further are divided into four subparts, that is simple past, simple present, past progressive, present progressive, past perfect, present perfect, and next is past perfect progressive, similarly present perfect progressive. I hope this is clear. So let's see the definition of our future tense. So the future tense form of any verb, what it refers to? It refers to the conjugation of the verb to represent an action that is going to happen in the future, or it will be continuing in the future. So what is future tense? जो भी incident हमारा future में होने वाला है, for example, she will study from tomorrow. So what she will do? She will study. तो वहाँ पे वो हमारा verb क्या है? हमारी क्रिया क्या है? What is done? It is studying. Okay. So it will happen when? Tomorrow. Future की बात कर रहा है ना वो. It is not talking about present. It is not talking about the past which has happened. It is talking about what? It is talking about future. तो कोई भी form of verb, form of any verb which refers to what? Which refers to the conjugation of verb to represent an action that is going to happen. वो action कब होने वाला है? Which is going to happen in the future, or which will be continuing in the future. या तो वो future में continue होने वाला है या तो वो future में happen होने वाला है. Okay. That is what? That is our future tense. Okay. Now moving forward towards the types and the forms of our future tense. As you can see, there are four types of future tense: 1, 2, 3, and 4. There are four types of future tense. I have told you the same in another tenses as well. Okay. So what are the four types of our future tense? First one is simple future. Second one is future progressive. Third one is future perfect. And the fourth one is future perfect progressive. Okay, so we have four forms of future tense. Okay, four forms of our future tenses: simple future, future progressive, future perfect, and future perfect progressive. I hope this is clear. So let's start with our first topic, that is simple future. So simple future form of verb is shall, will plus the bare initiative. ठीक है, simple future में हम क्या लगाएंगे? We will use shall and will plus the bare initiative. तो simple future form of be is shall and will plus be. अगर हमारे पास statement में we have be, then it will be shall and will plus be. अब देखो जो simple future form है of have is shall and will plus have. तो simple future form किसका होगा? हमारा have का. It is shall, will plus have. अगर be है तो it will be shall, will plus be. अगर हमारे पास कोई verb given है तो अगर हमें उसका simple future form बनाना है, it will be shall, will plus bare initiative. Okay, that is the word which is mentioned over there. Let's see some further examples of how we will be using it. See, uses देखते हैं हम हमारे simple future tense के. अब देखो, when first person is mentioned, okay, तो हम उसमें क्या है? जब हम shall की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं, we express what? We express pure future. मतलब जो future है, it has without any intention of determination. मतलब हमें ये नहीं पता है कि क्या होने वाला है in near future. It is just future. Okay. मतलब other words में what it indicates? It indicates that something will happen as a matter of course. Okay. But कुछ तो होगा future में. But उसमें जो determination का factor है वो नहीं रहेगा हमारे पास. For example,
let's see. It indicates that something will happen as a matter of course. ठीक है, I shall be 20 on my next birthday. What I'll be, this person will be what? It will be 20 when on its next birthday. अब next देखो, we shall have a holiday on Independence Day. हो सकता कब है? इंडिपेंडेंस डे पे क्या होगा? हमारा ऑफ होगा, हॉलीडे होगा. अब इसी फॉर्म में अगर हम इनफॉर्मल स्टाइल में अगर हम लिखते हैं, मतलब अब फॉर्मल नहीं लिखते हैं, इनफॉर्मल लिखते हैं. आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ओके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का मैंने आपको बताया था. द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इज कि जो फॉर्मल सेंटेंसेस हैं व्हिच वी यूज आर फॉर पर्टिकुलर बिजनेस फर्म, वी यूज इट फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. बट सिमिलरली व्हेन इट टॉक्स अबाउट द इनफॉर्मल, informal is what? Informal is used for our, we use it for family, we use it for friends, okay, which are close relatives में हम उसको यूज करते हैं, close kin में यूज करते हैं. फॉर्मल है जब हमने अपने स्कूल को लिख रहे हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिख रहे हैं, अपने कॉलेज को लिख रहे हैं. ओके, ऑल दीज आर व्हाट? किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को कुछ राइटिंग में दे रहे हैं. ऑल दीज आर फॉर्मल. अगर हम किसी इनफॉर्मल स्टाइल में, अगर हम इनफॉर्मल स्टाइल में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने लिखा आई शैल बी 20 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे. ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है वो किससे बात कर रहा है, वेदर इट इज फॉर्मल स्टाइल और नॉट. अब देखो, अब जब हम इनफॉर्मल में उसी चीज की बात करते हैं, जो शैल है ना, हम उसको विल से रिप्लेस कर देते हैं. यहाँ पे शैल की जगह हमारे पास क्या आ जाता है? यहाँ पे शैल की जगह हमारे पास हम इसको तो विल से रिप्लेस करेंगे. तो अगर हमें यही फॉर्मल स्टेटमेंट है दैट आई शैल बी 20 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन इनफॉर्मल स्टेटमेंट. देन इट विल बी आई विल बी 20 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. Shall we use it in formal sentences and informal? We often replace shall with what? We often replace shall with will. Okay. If you have any doubt, let me know. अब देखो, future progressive. I have told you that future progressive, the another name of future progressive is future continuous tense. It will be continuous, future continuous tense. अब मैंने पहले पढ़ाया था कि जहां पे भी हमारा ये कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा वहां पे वी विल हैव पार्टिसिपल्स. ओके, वर्ड विद आईएनजीज. तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? वी विल ऐड विल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. फ्यूचर प्रोग्रेसिव में हमारे पास क्या होगा? वी विल हैव विल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट है, वी हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम प्रेजेंट, ठीक है, टू फ्यूचर प्रोग्रेसिव. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग नाउ. तो उसमें फ्यूचर प्रोग्रेसिव में हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, मतलब हमें ये फ्यूचर के बारे में, उसके बारे में बताना होगा इसमें. तो इट विल बी आई विल बी स्टडिंग, ओके, फ्रॉम टुमारो, ओके, और डे आफ्टर टुमारो. तो वो आई विल स्टडी का आई विल बी स्टडिंग हो जाएगा. ठीक है, तो इट इज व्हाट? इट इज फ्यूचर प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट हमारा. अब देखो, विल रिप्रेजेंट क्या करता है कि कोई भी ऑनगोइंग एक्टिविटी है जो फ्यूचर में होगी. स्टडिंग है, ठीक है, she will be studying, करती रहेगी, वो पढ़ाई करेगी. का फ्यूचर की बात कर रहा है, ऑनगोइंग एक्टिविटी है, चलती हुई एक्टिविटी है जो फ्यूचर में भी होगी. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दैट आई विल बी प्लेइंग फॉर एन आवर. व्हेन दिस पर्सन विल बी प्लेइंग, इट विल बी प्लेइंग फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए. ठीक है, वो खेलेगा. ठीक है, कब खेलेगा? 1 घंटे के लिए. कब? फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में खेलेगा. इट पर वो भी बोल रहा है कि आई विल बी प्लेइंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे के लिए खेलूंगा. ओके, next says, will I be spending too much money if I buy the newer model? Will I be spending too much money if I buy? अगर मैं नया मॉडल खरीदूंगा तो will I be spending too much money? मैं क्या ज्यादा पैसे खर्च करूंगा? तो यहाँ पे I'll be spending is what? Will I be spending is our future progressive tense. Next is, he'll be fighting his way to the boxing championship. Where what he is doing? He is fighting his way. वो कहाँ पे फाइट कर रहा है? बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जाने के लिए. व्हाट ही इज डू? ही इज फाइटिंग. ओके, ही इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, ही विल बी फाइटिंग. वो लड़ेगा. किस लिए? अगर उसको आगे बॉक्सिंग चैंपियनशिप में क्या करना है? जाना है. ओके, नेक्स्ट इज, ऑलवेज बी नाइस टू दोज younger than you because they are the one who will be writing. अब अगर मुझे इसमें आप I'll say you कि इसमें mark down the verb and future progressive tense जहाँ पे use हुआ है. तो in the very first statement it will be playing. Second statement में will I be spending. Third statement में will be fighting. Fourth statement में who will be writing.
So whenever you have to convert a statement from simple future to future progressive, yeah, for simple past to future progressive, what you have to do at that point of time, you have to keep in mind that what you will do. The rule number one is what? Rule number one is what? We have to use will plus present participle. I hope this is clear. हम क्या use करेंगे? हम use करेंगे will and present participle. If you guys have any doubt with respect to that, please let me know. Similarly, mark down the rules in this one also. In simple future, first rule will be what we will use. We will use shall and will. Similarly, अगर हम बात करें हमारे simple past या फिर simple present tense की, this P stands for past and this SP stands for simple present. Okay. So when we didn't, what we did in simple past, we used was and were. We use was and were. Okay. Similarly, with the form of verb that is given, उसके साथ में क्या लगाएंगे? DED. Okay. The next with simple present. अगर simple present की हम बात करें, तो simple present में हमने यूज किया था is MR. We have used is MR with the first form of verb, जो भी हमारे form की verb की form थी, ठीक है? We have used that. It is V and F. Okay. Let me slide myself down. Yeah. Okay. So it is simple present में हमने is MR plus first form of verb के साथ यूज किया था. Past में हमने क्या किया था? Was word यूज किया था with D and ED to the verb form. Okay. I hope future progressive tense is clear. You have no doubt in that. Let's start with our next topic, that is future perfect tense. Listen, the very first thing I want to make clear over here is when you will get the statements now, you will only be able to do it if you practice it. If you don't practice it, there is no good use. आप इसको जितना practice करेंगे उतना ज़्यादा clarity में आएगा. Next comes future perfect. अब देखो future perfect statements कैसे? Future perfect में हम क्या use करेंगे? किसी भी verb की future perfect form में हम क्या use करेंगे? The very first rule of our is this rule number 1. It is we will use shall and will plus perfect infinitive. Sorry, ठीक है? We will use shall and will plus perfect infinitive. Second में हम क्या use करेंगे? अगर हमारे पास में shall और will पहले से स्टेटमेंट में मेंशन्ड है और shall और will के साथ में हमारे पास क्या है? We have had या फिर have है हमारे पास, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? have और shall और will में we'll convert it into shall oblique will have plus had. Okay. Yeah, shall will, it is one thing, it is shall will plus have and had. We will convert it into one form. Next is this construction is used to when we have means to experience, to receive or to take. जब ये जो हमारा have है, which we will use over here, हमने पिछले दोनों tenses में बात किया था what we have to do when we have in the statement. Okay, so what we do at that point of time is कि अगर हमारे पास future perfect form में shall और will के साथ में हमारे पास क्या है? हमारे पास have है, तो उस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हम करेंगे, हम we will write down कि जो have है ना, इसका मतलब क्या होगा? Either it means to experience, another thing it means to receive, and the next thing it means to take. हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे, ठीक है? या तो हम वो जो have है वो हम किसकी जगह पे we will use it, या तो experience की जगह पे, या receive या फिर take की जगह पे हम इसको यूज करने वाले हैं. अब देखो हमारे इस future perfect tense में he will have had his exam by the end of this month. He will have had his exam by what time? By the end of this month. अब हमने यहाँ पे have had किसको replace करके यूज किया? हमने इसको substitute किया था that अगर ये statement होता he will have taken his exam by the end of his month, तो यहाँ पे will have taken की जगह पे हमने क्या यूज किया? In place of this will have taken, we have used that he will have had his exam by the end of this month. Up next statement states that he will have had a lot of what? A lot of opposition. अब यहाँ पे हमने similarly अगर हमारा statement original statement जो हमारा होता वो क्या होता? Which will have shall or will plus have in it. It will be that he will have experienced a lot of opposition. अब have experienced की जगह पे तो हमें क्या use करना है? We have to use this. We have to use what? We have to use have plus had.
तो फ्यूचर परफेक्ट में जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी दैट ही विल हैव हैड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन. Many a times you will feel like all these sentences, they are not making sense to you, okay? But when you feel like that they're not making sense to you at that point of time, please don't get confused. Try to remember the rules, try to stay calm and just go with the flow, okay? जो rules है आपने पढ़े हैं उसी फॉर्म में आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है. डोंट थिंक यार ये तो ऐसे तो हम इसका सेंस ही नहीं बन रहा है. द थिंग इज ना, वी डोंट स्पीक इट, we don't speak this language, मतलब अपने daily basis पे we don't use these sentences. We use what? We use basic sentences. So when we use basic sentences, what happens with us at that point of time is कि जब हम basic sentence use करते हैं, हमें ये सब sentences use करते हैं when in our exam or everywhere, what it does, we feel like that it is not correct, okay? So at that point of time, what we have to do, we have to just keep in mind our rules, and after that, when we have to keep in mind our rules, we cannot make this mistake of attempting that question incorrect. Because अगर वो incorrect हो जाएगा ना, then आपने इतना सब पढ़ा, इतने सब rules का उनका benefit नहीं है. Either you feel like it is not making sentence, just go with the flow. Have trust on your knowledge. Okay. अब देखो next example में देखते हैं. That was a lot of pep talk. She will have had a lot of letters of congratulation. What she will have had? A lot of letters of congratulation. But original statement क्या था? That she will have received a lot of letters of congratulation. तो हमारा form क्या है? Our rule number 2 is what? R2 is what? कि whenever we have shall will के साथ में have, जब भी हमारे statement में shall और will के साथ में क्या attached होगा? Have. At that point of time, we have to construct it in what? Shall will के साथ में we have to construct have plus had. Okay. और ये कंस्ट्रक्शन किस जगह पे यूज होता है हमारा? दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन, जहां पे जो हैव का मतलब क्या हो, वेदर इट मींस टू एक्सपीरियंस, उसका मतलब हो टू एक्सपीरियंस, नेक्स्ट इट मींस टू रिसीव, एंड द अनदर नेक्स्ट इट मींस इज टू टेक. ओके, सो वी हैव 3 फॉर्म्स और इन 3 उसमें हमारा कवर हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नाउ नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज देयर इज वन मोर रूल. एक बार देख लेते हैं. बी की बात होती है, वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट बी. अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म में क्या है, इफ इट इज गिवन बी, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट में है शी विल बी आवर टीचर, ओके, तो अगर आपके पास क्या है, वर्ब के फॉर्म में हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब बी. तो बी में हम क्या कन्वर्ट करेंगे? वी विल कन्वर्ट इट इनटू विल हैव बीन. हम उसको बी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? इफ दिस बी इज ओवर देयर, वी विल कन्वर्ट इट इनटू विल हैव बीन. इट विल बी विल हैव बीन. ओके, या अब देखो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है that she will have been a teacher for what? For 10 years by March next, ठीक है, by next March what? She will have been a teacher. 10 साल से she will be a teacher for अगले मार्च तक. ओके, टाइम इज 10 years. एंड यहाँ पे हमने क्या लिखा? यहाँ पे हमने बी को किस में कन्वर्ट कर दिया? will have been. Next, he will have been dead for 20 years by the year. ठीक है, इस साल के खत्म होने तक उसको मरे हुए 20 साल हो गए. ओके, तो he will have been dead. So this will have been is what it is signifying? It is signifying that the person is dead for what? He has been dead for 20 years by the end of this particular year. So यहाँ पे हमारा क्या आएगा? That he will have been dead. Okay, I hope this is clear. The next thing is we will talk about the uses of what? Uses of our future perfect tense. Okay, अब देखो, future perfect expresses what? Completion of an action by a given time in future. What it express? It express completion of an action by what? By a given time in future. Okay, so future का एक given time होगा, जैसे कि यहाँ पे भी हमारे पास देखा था हमने. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 10 years given है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में 20 years गिवन है. तो यहाँ पे क्या बता रहा है? इट इज एक्सप्रेसिंग व्हाट? इट इज एक्सप्रेसिंग की एक्शन जो है इस टाइम से फ्यूचर के इस टाइम तक है. फ्यूचर क्या है? मार्च एंड हमारा फ्यूचर ही तो है. वी हैव नॉट सीन दैट मार्च एंड, इट विल बी कमिंग सून. ठीक है, तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मार्च एंड आने वाला है. ठीक है, बाय द एंड ऑफ ईयर. तो व्हाट इज दिस? इट एक्सप्रेसेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ गिवन टाइम इन फ्यूचर. व्हाट इट एक्सप्रेसेस?
कि कोई भी कंप्लीशन किसी भी एक्शन का बाय व्हाट, बाय अ पर्टिकुलर गिवन टाइम इन व्हाट, इन फ्यूचर, फ्यूचर के एक पर्टिकुलर गिवन टाइम की बात कर रहा है। जैसे कि he will have built a house by the end of this year, यहाँ पे इसने क्या बोला है कि he will have built a house, घर साल के एंड तक व्हाट, उसने अपना घर बना लिया होगा। सो दिस स्टेटमेंट से दैट, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है हमारा, क्योंकि वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इट इज एक्सप्रेसिंग कंप्लीशन ऑफ एन पर्टिकुलर एक्शन बाय अ गिवन टाइम इन व्हाट, इन आवर कमिंग फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट सी, शी विल हैव लेफ्ट दिस प्लेस बाय नेक्स्ट जनवरी, अगले साल जनवरी तक, ठीक है, उस पिछले जनवरी, जो कमिंग जनवरी है, नेक्स्ट जनवरी तक, शी विल हैव लेफ्ट दिस प्लेस, वो ये जगह छोड़ देगी, ठीक है, वो ये जगह छोड़ के चली जाएगी, कब, अगले साल जनवरी तक। तो यहाँ पे क्या है, टाइम प्रोवाइडेड है ना कि इस पर्टिकुलर मंथ से जनवरी तक, यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडेड है कि इस साल के एंड तक, एंड ऑफ द ईयर। सो ये क्या एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेसेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय व्हाट, बाय अ गिवन टाइम इन फ्यूचर। अब नेक्स्ट देखो, शी विल हैव बीन इन हॉस्पिटल फॉर 2 years इन नेक्स्ट जुलाई, अब उसको हॉस्पिटल में रहते हुए कितने टाइम हो गया है, इट सेज व्हाट, इट स्टेट्स 2 years, so 2 years is what, is our given time, and our future perfect tense is expressing what, it is expressing, वो क्या बता रहा है कि 2 साल का कंप्लीशन हो जाएगा उसको नेक्स्ट कब, नेक्स्ट जुलाई में। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही स्टेट्स दैट he will have had his exam by the end of this month, इस एग्जाम, इस मंथ के एंड तक उसके एग्जाम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इट स्टेट्स की टाइम क्या है हमारा, एंड जो हमारा गिवन टाइम है, जो कंप्लीशन है एक्शन का, वो क्या है, ये पर्टिकुलर मंथ का एंड, और हमारा जो एक्शन क्या है, वो क्या है कि उसके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, दिस इज द एक्शन जस्ट दैट इज टेकिंग प्लेस एंड द टाइम इज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। I'll make it revise you again after we will complete all of the parts of this tense. Okay, next states कि future perfect often कहाँ पे use होता है, to express a past possibility, कहाँ पे एक और तरह से हम कहाँ उसको use कर सकते हैं, किसी भी past possibility को express करने के लिए भी हम किसको use कर सकते हैं, we use future perfect tense। कैसे, in addition to which, in addition to models such as will, can and may also be used, ठीक है, will, can और may, they can also be used। अब देखो, he के साथ हम, it says he may, I can, I will, okay, have won a lottery, यहाँ पे there is this oblique, okay, yeah, so he may, I can, will have won this lottery, तो हम इसको क्या यूज करने के लिए, पास्ट पॉसिबिलिटी, कि हाँ मैं जीत सकता था ये लॉटरी। लॉटरी कब हुई थी, इट हैपेंड इन द पास्ट। ओके, व्हाट इट स्टेट्स कि जो लॉटरी थी इट हैपेंड इन द पास्ट, एंड द नेक्स्ट थिंग इट इज स्टेटिंग इज कि अगर ये पास्ट में हुई थी बट उसका रिजल्ट अभी आया है, ठीक है, तो फ्यूचर में रिजल्ट है, बट इंसिडेंट हमारा कब हुआ था, इंसिडेंट हैपेंड इन व्हाट, इन पास्ट। तो पास्ट पॉसिबिलिटी को भी बताता है, पास्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि वो क्या था, वो लॉटरी जीत सकता था। अब नेक्स्ट इज, all the 3 sentences mean there was a possibility of his winning the lottery but we do not know whether he actually won it or not। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि उसकी विनिंग, लॉटरी विनिंग चांसेस तो थे, पर पॉसिबिलिटी कितनी थी कितनी नहीं हमें नहीं पता है ना, कि whether he actually won it or not। The statement what it simply says, he says that he may और या फिर I can will have won the lottery। okay, मैं जीत सकता था लॉटरी, पर क्या उसने एक्चुअली जीती, we don't know whether he actually won it or not। what the statement is only saying कि मैंने लॉटरी खरीदी थी, मैं जीत सकता था, जीता के नहीं, it was not mentioned anywhere। so what future perfect tense again tells us, it tells us about what expresses the past possibility। so whenever you get a statement जहाँ पे हमें क्या express करना हो, where we have to express our past possibility, in such kind of statements the one thing that you have to do is what, you have to keep in mind कि जहाँ पे भी past possibility की बात हो रही है, what we will be using over there, we will be using over there our future perfect tense। okay, and what rules of future perfect tense we have, let's see। yeah, so the rule of our future perfect tense is कि अगर हमारे पास be है तो it will be will have been। the next thing is अगर हमारे पास में will shall है तो it will be shall will have and had। अगर हमारे पास में verb है तो it will be shall and will plus the perfect infinitive जो statement में हमारा given है। okay, I hope this is clear।
moving forward towards our next topic. Okay, this is future perfect progressive tense. अब फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव यहाँ पे पता है, प्रोग्रेसिव में हमें अगेन वी नो दैट प्रोग्रेसिव मींस व्हाट? प्रोग्रेसिव मींस कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब जहाँ पे हमारा प्रोग्रेसिव आ जाता है वहां पे हमें पता है व्हाट वी यूज. द वेरी वन थिंग जो हमारे प्रोग्रेसिव टेंसेस के साथ फ्री में मिलता है, इट इज द यूज ऑफ अ पार्टिसिपल. इट कैन बी पास्ट पार्टिसिपल, इट कैन बी प्रेजेंट पार्टिसिपल. सो व्हेन इट इज फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, नाउ वी विल ऑलवेज यूज व्हाट? वी विल ऑलवेज यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल. वी विल नेवर यूज एनीथिंग, हम पास्ट पार्टिसिपल नहीं यूज करेंगे, इसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे. वी विल ओनली यूज आ present participle. If it is walk, it will be walking. If it is talk, it will be talking. Okay, if it is laugh, it will be laughing. So in our future perfect progressive tense, what we see here, it is will have been plus present participle. Okay, it is will have been plus present participle. अब देखो इसको हम कैसे यूज करेंगे. जैसे कि स्टेटमेंट में है I will have been playing for what? For 2 hours by breakfast. I have been playing for how many hours? For 2 hours. अब ये स्टेटमेंट में है कि I have been playing for 2 hours by breakfast. ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद I'll be playing what? I'll be playing for 2 hours. तो will have been playing is our what? It's a use of future perfect progressive tense. कि ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद I'll be doing anything which is continuous. Continuous क्या है यहाँ पे? Continuous is our playing. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो, by the time the boat arrives, they will have been living without proper food for 2 weeks. जब तक बोट अराइव हुई उससे पहले what? वो कैसे रह रहे थे? They will have been living without some proper food for 2 weeks. Okay, कैसे रह रहे थे वो? Without proper food. तो यहाँ पे use of our future perfect progressive tense is where it is that they will have been living without proper food. They will have been living without proper food. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो, shops that will have been running for 3 or 2 years by then will have to close down. जो 3 या 4 साल से चल रही थी शॉप्स, ठीक है, अब उनको क्या होगा? will have to close down. उनको आगे जाके क्या करना होगा? they have to close down. उनको बंद होना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी हमारा स्टेटमेंट में क्या है? shops that will have been what? will have been running. यहाँ पे हमने अपना क्या यूज किया है? Again we have used what? We have again used our future perfect progressive tense. अब देखते हैं uses future perfect progressive tense के. अभी तक हमने अपनी चारों tenses पढ़ी. We talked about simple future, we talked about future progressive, we talked about future perfect, and last was future perfect progressive tense. अब देखो uses देखते हैं अपने future perfect progressive tense के. Future perfect progressive tense is used for what? For an will be completed at some specific time in future. Future के एक particular time बाद, जैसे that girl said that वो she'll be playing for how many hours? For 2 hours. After what? After breakfast, by breakfast. ठीक है, तो वो क्या कर रही है? She is playing. वो action है, ongoing action, वो खेल रही है. But after breakfast भी वो खेलेगी. तो क्या है? Future में कब खत्म होगा? वो breakfast के बाद खत्म होगी वो चीज. तो यहाँ पे हमारा ऑनगोइंग एक्शन हो रहा है, प्लेइंग हो रहा है, और स्पेसिफाइड टाइम कब का है? फ्यूचर का. इट इज आफ्टर ब्रेकफास्ट. अब नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 2 इज, या जस्ट लेट मी चेंज दिस थिंग बिकॉज़ इट इज नॉट सो विजिबल टू मी. Okay, so next is this, that John will have been baking what? John will have been baking a cake. तो केक उसने बेक करना रख दिया, बट अभी तक what? It is happening. It is an ongoing action. वो complete bake कब हो जाएगा? It will be completely baked after an hour or so. So यहाँ पे क्या है? It is an ongoing action जो कब खत्म होगा? Again, it will be completed in what? It will again be completed in future. I hope this is clear. The next thing is कि जो future perfect progressive tense है, it is typically used with two time expressions. उनको हम कब use करते हैं? We use it with two time expressions. अब two time expressions क्या होते हैं? वो expressions जो signify क्या करते हैं? एक तो future का time और activity का length. ठीक है, कि जो particular activity हो रही है वो कितनी देर के लिए हो रही है और future में किस time तक होगी. Okay, देखो अब जैसे यहाँ पे this example
will be more clear to you by this example. अब देखो, by 6 o'clock John will have been baking a cake for an hour. Okay, by what time? यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे by 6 o'clock. फ्यूचर में किसकी बात हो रही है? 6 o'clock की बात हो रही है. और हमारा जो लेंथ है उसका पर्टिकुलर एक्टिविटी का, सॉरी, जो एक्टिविटी का हमारा लेंथ है, इट विल बी फॉर 1 hour. और एक्टिविटी क्या है यहाँ पे? Our activity is what? Our activity is baking. Okay, so what is our activity? Our activity is baking. Just give me a minute. Yeah. तो यहाँ पे क्या है? हमारी एक्टिविटी बेकिंग है. और कितनी देर की बात कर रहा है वो? It is talking about for an hour, which is the length of our activity. And by 6 o'clock, so it is 6 o'clock is what? 6 o'clock is the future time. Okay. अब नेक्स्ट चलते हैं. चलो यहाँ पे हमारा ये खत्म होगा. Future perfect progressive tense. Let's just revise it once and then we will wind up this class. Okay. So yeah, हमने क्या क्या पढ़ा? We have talked about a lot of things. We have talked about our future tense. I have told you many times that tenses are further divided into 3 parts. That is past, present, and future. And after that, the past, present, and future are also further divided into 4 parts. That will be future. Future will be divided into simple future. The types are simple future, future progressive, future perfect progressive. Similarly, simple past is simple past, past progressive, past perfect, and past perfect. उससे पहले हमारा एक और था present. Similarly, simple present, present progressive, past perfect, present perfect, and present perfect progressive. I've been teaching tenses from past 3 days and I'm so confused with past, present, and future right now. So pardon if I say anything wrong. Yeah. So simple future में हमने पढ़ा what we will use. We will use just shall and will plus very initiative of the word which is given. ठीक है. Next हमने उसमें पढ़ा फॉर्म अगर हमारे पास बी आएगा तो शैल एंड विल के साथ हम क्या अटैच कर देंगे? स्टेटमेंट में बी अटैच कर देंगे. अगर हमारे पास में हैव होगा तो हम उसमें हैव अटैच कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखो यूज कहाँ पे करेंगे हम उसको फर्स्ट पर्सन में क्या एक्सप्रेस करेंगे? वो सिंपल इट विल एक्सप्रेस द प्योर फ्यूचर. किसी भी डिटर्मिनेशन के अलावा बिना किसी डिटर्मिनेशन के वो हमारे पास क्या एक्सप्रेस करेगा? इट विल जस्ट एक्सप्रेस आवर प्योर फ्यूचर. इन अदर वर्ड इट इंडिकेट दैट समथिंग विल हैपन एज अ मैटर ऑफ व्हाट. कोई चीज होगी व्हाट एज अ मैटर ऑफ कोर्स कुछ होना ही है. विल हैपन. ठीक है. बट एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन के बिना विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटेंशन ऑफ डिटर्मिनेशन. ठीक है. What we express the pure future. We don't say कि future में what particular thing we are talking about. Okay. अब जैसे I shall be 20 on my next birthday. We shall have a holiday on Independence Day. अब Independence Day what? Independence Day come every year. Okay. Independence Day come every year. There is no special intention about it. There is no future intention about it. Okay. अब वैसे ही अगर हमने formal statements में हम क्या use करेंगे? Formal statements में we will always use shall. Similarly, if we get to know, if we write an informal style and if we do correct informal statements, what we will do? We will use will. Okay. Okay, shall and will related questions I'll tell you right away. What happens now? Many a times the statement is formal, but the use of will is not there. The use of shall is there. Okay, or the statement is informal. वहाँ पे क्या होगा? हमारे पास में जैसे भी I have told you कि if there it's a formal statement, use of will not be there, use of shall will be there. Similarly, what comes in question is यही आपको informal style में दे देंगे will shall everywhere. Okay. So जब आप informal way में किसी से बात करोगे, you will not use shall, you will always use what? You will use will. So if you are talking to any of your colleagues, which is professional relationship, जहाँ पे भी आपका formal relationship है या फिर formal form में आपका paragraph है, okay, formal writing style में आपका paragraph है, you have to keep in mind if anywhere there is will, it means the statement isn't correct right over there. You have to correct it by what? You have to correct it by shall. Okay. Next. Future progressive में I have told you what we will use. We will use will and past participle. Will क्या represent करेगा? कोई भी ongoing activity future की. ठीक है. जैसे कि I'll be playing for an hour, will be spending too much money. Okay. अब next देखो, next हमने पढ़ा था
फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में हमने पढ़ा था विल शैल के साथ में क्या होगा, परफेक्ट इन्फिनिटिव होगा। विल शैल और विल हैव अगर होगा हमारे पास में, अगर हमारे पास में हैव आता है एंड इट इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, व्हाट वी विल डू इज व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वी विल यूज व्हाट, वी विल यूज शैल विल प्लस उसके साथ में हैव के साथ में हम क्या लगा देंगे, हैड। अब ये हैव जो है हम इसको किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इधर टू एक्सपीरियंस, या तो कोई चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं या फिर टेक कर रहे हैं। जब भी इन तीन चीजों का whenever the statement is about what, it is about experiencing, it is about receiving or it is about taking, अगर इन तीनों में से एक होगा whether it is experiencing, taking or receiving, okay, keep this in mind, experiencing, receiving, taking. If you have these three words, okay, and you have with it, then what you will use at that point of time, you will add have and had together. So the statement will be shall oblique will, whether it will be shall or will, and another thing it will be have and had. Let's move forward. Next हमने पढ़ा use. Next is हाँ, if it comes be, अगर वहां पे verb के साथ में क्या होता है, there is be, then we will convert it into what, it will be converted into been. तो वही will and have के साथ में we will add what, will have been. Okay. अब next देखो, हमने इसके uses में पढ़ा था क्या, ये क्या एक्सप्रेस करता है, किसी भी एक्शन का कंप्लीशन बाय अ गिवन टाइम इन फ्यूचर, एक फ्यूचर के टाइम में किसी भी एक्शन का कंप्लीशन एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट थिंग क्या एक्सप्रेस करता है, क्या पास्ट की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है कि पास्ट में आई हैव डन दिस थिंग बट आई डोंट नो कि आज वो जाके सक्सेसफुल है कि नहीं है। ओके, व्हाट फ्यूचर मतलब करंट बात नहीं कर रहा है, वी डोंट नो कि वो हुई कि नहीं हुई, but we know कि past में this particular thing happened, okay, this particular thing was done in the past, but we don't know कि whether in the future or in the present it is actually there or not. Okay, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लॉटरी वाला लिया था, that he will have won the lottery, अगर उसने लॉटरी लिया था, लॉटरी टिकट, he bought lottery ticket, but he will have won, वो जीत गया होता, पर कैसे, we don't know the what we don't know here over is कि वो जीता कि नहीं। okay, यहाँ पे हमें क्या नहीं पता है कि वेदर पॉसिबिलिटी, दैट पॉसिबिलिटी जो था वो प्रॉपर से सच हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज व्हाट आई नो, the possibility we have of winning the lottery, whether it got true or not. Okay, this is what we talk in future perfect tense. ये क्या यूज करता है, पास्ट की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। तो wherever you will feel like this is a past possibility statement, check it what is there, if it is correct or not. Okay, अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है उसमें हमने क्या बात किया था, वी हैव टॉक्ड अबाउट विल हैव बीन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बात किया था, तो पार्टिसिपल के साथ हमारा फिक्स में फ्री में क्या आता है, आईएनजी, वी ऐड आईएनजी टू इट। ओके, फॉर प्रोग्रेसिव प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने यूज किया। अब ये कहाँ पे हम यूज करेंगे इसको, इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज फॉर एन ऑनगोइंग एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड। अभी एक एक्शन हो रहा है, ठीक है, आई एम टीचिंग यू, ये कंप्लीट कब होगा, कंप्लीट जाके होगा आज कुछ टाइम में, ठीक है। तो इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट एन ऑनगोइंग एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट व्हाट, एट टाइम इन पीरियड। ओके, यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम की बात की गई है कि एक फ्यूचर का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम है, वहां पे कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे प्रोग्रेसिव टेंस जो है ये हमारा दो टाइम एक्सप्रेशंस को डिफाइन करता है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट टू टाइम्स एक्सप्रेशन, sorry I can't see it properly because my one eye is not functioning well, yeah, so it is two time expressions की बात किया है यहाँ पे। पहला क्या है, first it is specifying what, it is specifying the time in future, and another it is specifying what, it is specifying the length of activity. So whatsoever is the length of that activity, specifying that, and the next thing it is specifying the time which is at what time the particular activity will take place in future, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे हमारी एक्टिविटी क्या थी, और एक्टिविटी व्हाट, दैट जॉन विल हैव बीन बेकिंग अ केक फॉर 6 hours। तो यहाँ पे जो लेंथ है, ठीक है, वो 1 hour है। बाय 6 o'clock की बात की गई है, बाय 6 o'clock क्या बता रहा है कि 6 बजे तक, ठीक है, 6 बजे तक की बात की गई। तो टाइम क्या है फ्यूचर का, इट इज 6, और अभी करंटली यहाँ पे जो लेंथ की बात कर रहा है एक्टिविटी की, इट इज फॉर एन आवर। So by this we came to know that the tense over here is perfect progressive. Okay, future perfect progressive.
I hope this is clear to everybody. Please make sure you practice the questions. I'll make sure that we do over here at the class as well. If you people have any doubt with respect to this, if you have any question, any statement which you feel like I have not explained to you, or you have any proper doubt in that you have not got it, please let me know so that we can discuss it in the upcoming classes. So that's all for our today's topic. We will be discussing tomorrow. I am thinking of picking up the question paper again and we will be solving that. That's all for today. Hope you guys have a good day ahead. If you have any doubt, any query, please let me know. And thank you so much for your day and for your time. Have a great day ahead. Bye.